I think we should keep to the time, especially because it's a fun program and everyone has joined in. Let's start. Malti, I want you to start with that introductory song. Chalo. सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने को अपने जमा दे, जहाँ रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा तेरा बसेरा, सब की भलाई में है, जग की भलाई में है। तुझ बिन सब कुछ सोना सोना, तुझ बिन कुछ न रहे जिंदा। घुटने टेक दे तेरे आगे, नाकामी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। Warm welcome to everyone who has joined in on this special occasion of celebrating Women's Day. Women are power, and today we are going to be celebrating it in the various hues of her life of a woman and getting, of course, inspirational messages from all our seniors and leaders. I would like to start with just a small lamp lighting ceremony because it is a celebration. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampadah Shatru Buddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute Deepajyotir Namostute
शत्रुबुद्धि शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। डॉक्टर मीनाक्षी, इसका मैं अर्थ बताऊं 1 मिनट के अंदर? Sure. सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सब आरोग्य माने बीमारी से दूर हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। शत्रु बुद्धि, शत्रु की बुद्धि का विनाश हो और सब लोग शाम होते ही दीपक को नमस्ते करें, वो हम सबको ये देगा। Thank you so much, Sujata. It feels so good to get the meaning out of what we hear. It sounds so good, but to understand the meaning adds a new dimension to it altogether. Thank you. So, we'll start a program today. Before we start the program, I will want some inspirational words today from the founder of this foundation and this forum, that is Dr. Urmil Sharma. I don't think she needs any introduction. And today is not a day for introductions. It is a day for celebration. So today, I think we'll all refrain from introductions and just hear words of wisdom and enjoy ourselves. Dr. Urmil Sharma. Good afternoon, dear friends. I'm indeed privileged to be a part of this forum. From the time of existence of women, they have always been kept in the background and have neglected their health. As women started taking jobs, I see a vast change in their overall growth. I would like to lay importance on their health. They should exercise daily, eat healthy and nutritious good food all the time, and get regular health checkup done. Mammography, ultrasound, etc. After the age of 40, they should get annual checkup done without fail. I want to emphasize a very important point, that all doctors must work in harmony and help each other to progress successfully. Wishing you all the best of health and happiness always, and protect every doctor from each other, and don't ever criticize anybody, and have a good health all the time. This is my personal request to all our friends. Thank you very much. Great. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. And indeed, this year's theme of Women's Day is Break the Bias. And if you ask me frankly, I feel that it is men who need to break the bias today. Women do whatever men do and better, but I think it's high time that men learn that they have to learn to do what women can do. With these words, before we listen to Dr. Bhala's song, I would request Dr. Sharda Jain, because I think although she is not, her name was not listed on the agenda, but I don't think any meeting can be complete without her wisdom. I think on this International Women's Day, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा डेफिनेटली एक शक्ति पर्व है। एक ही दिन नहीं, हमको सारे दिन वुमेन्स डे मनाना चाहिए, क्योंकि एवरी डे गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू शो आवर टैलेंट्स। एंड व्हाट आई फील इज आई एम गोइंग टू गिव वॉइस टू द वुमेन पावर। एंड ये इसको मैं संकल्प दिवस के तरह से लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी से अपील है कि यू ऑल्सो जॉइन योर वॉइस विद माई वॉइस, सो इट रीचेस टू एवरी वुमन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, that उनको ये एहसास हो कि they are also full of energy. हमारी हेरिटेज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है। मकाले ने जब लिखा तो उसने ये बताया कि आज से 300 साल पहले 5 लाख गुरुकुल थे लेडीज के लिए, 3 लाख गुरुकुल थे जेंट्स के लिए, और उसने ये कहा था कि उनकी आंखों में मर्यादा और गरिमा छलकती है। ये उस अंग्रेज अफसर ने लिखा है कि they had that kind of a woman power at this day. So my greetings
And warm thanks to all Delhi Gynecologist Forum, because I feel कि गायनी फोरम की उनकी प्रेजेंस से और उनकी पार्टिसिपेशन से पहचान मिली है, और दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम ने उनको अगर चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज दी है तो उन्होंने भी अपनी पहचान बनाई है। मेरी आज की तारीख में बस 3 अपील है। एक अपील ये है कि अपने जूनियर कुलीग्स और अपने कुलीग्स को अपनी स्किल्स दीजिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। Secondly, I will say that Delhi Gynecologist Forum runs many courses. They are top courses in the country. Patronize them. Instead of going for 4-5 days for 4-5 session to Germany and write down Germany returned, उससे अच्छा है अपने courses को patronize करें. They are 20 times or 100 times better courses than them. And lastly, जब आप अपनी चीज को पैट्रोनाइज करेंगे, उसमें अपनी मिठास है और एक अजीब सा जो है आजीवन आपको मिलता है कि वो ज्ञानवान होते हैं आप। और लास्टली, बी प्राउड टू बी दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम मेंबर्स, बी प्राउड टू बी Delhi and NCR gynecologist member, and be proud to be North Indian gynecologist, and always stand for them. So thank you very much. Ma'am, if you could just talk about the Twitter account also, since we have many more people are joining now. Anybody who has got a Twitter account, like I have an account, I don't use it, but I'm going to use it tomorrow. So write down as an appeal to Delhi police. खोलेंगे उसको टैग करेंगे at the rate of Delhi police, तो ये उन्हीं को टैग हो जाएगा। Appeal by Delhi Gynecologist Forum on International Women's Day that please deploy lady doctor in every district in Delhi. So for the safety and the protection of the clinics and the small hospitals. So I think if you will write down an appeal, and couple of us will going to be follow it up, I think we will see to it that the magic will happen in a month's time. So I think everybody who has a Twitter account should definitely write an appeal tomorrow. And maybe it's there in hundreds. We want it should be done. Thank you so much, ma'am. Before I hand over to Sujata, I would request Malti to play the video we have.
the team. This was wonderful. I'm sure everyone is having goosebumps now. It was such a beautiful rendition. And now to start the program, we have Dr. Sujata taking over as the first compere. Auntie, stop sharing, beta. Sujata is joining all of us from Rishikesh. So thank you so much, Sujata, for taking the initiative and being determined like every woman should be every single day of the year. Sujata, unmute yourself, Sujata. Yeah, unmute yourself. ओह सॉरी। सारे बड़े लोगों को प्रणाम और मेरे साथ के लोगों को हेलो। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। कबीरदास जी ने बहुत सालों पहले कहा था, नारी निंदा ना करे, नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और औरत वो सुनना चाहती है जो उसके मन में होता है, औरत वो नहीं सुनना चाहती है, औरत वो सुनना चाहती है जो वो चाहती है। इसके लिए सारे बहुत पुराने काल से औरतों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए और उसको दूर करने के लिए स्पेशली अनइक्वल सैलरी, मोर वर्किंग आवर्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट, नो वोटिंग राइट्स, इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में। एंड फाइनली 1911 में 8 मार्च को कल के दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे का दर्जा दिया गया और तब से हर साल हम लोग इस दिन को मनाते आ रहे हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर शारदा जैन मैम ने बोला है, नारी बस एक ही दिन क्यों मनाए हम नारी दिवस को? नारी का नाम ही त्योहार है, नारी का नाम ही मनाना है और ये नया जमाना है, इसलिए हर दिन को हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह से खुश होकर मनाना चाहिए। और आज मैं आप लोग के सामने इस हिमालय की गोद से, गंगा नदी के किनारे से एक जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही उत्तम संस्कृत पोयम आपको सुनाने जा रही हूँ, जो उन्होंने तब लिखा था जब हमारे देश के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रस्तुत है। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। मत्स्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रस्तुत पुण्य पंथ में बढ़े चलो, बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मातृभूमि के कौन शूर साहसी। राति सेन सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो ये प्रस्तुति थी। और एक दो चीजें मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। आप लोग को मालूम है सबसे पहली MBBS कौन थी हमारे इंडिया से और पूरे एशिया से? वो भी एक कदम्बिनी गांगुली जी थी। हाँ, और पहली CM 1908 में जो नारी थी वो सुचिता कृपलानी जी थी। और जो पहली कैप्टन थी 1835 में, वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। और पहली जो शासिका थी वो रजिया सुल्ताना जी थी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे स्पीकर्स में सबसे पहले संगीता जी को, जो कि ESI में सीनियर कंसल्टेंट हैं। शी इज फाउंडर सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली गायनी फर्म। सो डॉक्टर संगीता जी, आप प्लीज हम लोग को कुछ बताइए। Good afternoon, everybody. First of all, I thank the organizers for making my dream true of celebrating the Women's Day with the women, all women I admire. Thanks. I pay my respect to all my seniors. And as Dr. Meenakshi has said, that the theme of 2022 is break the bias as well as gender equality today for sustainable tomorrow. So I will make it like this: gender equality for health today for a sustainable tomorrow. So what is a gender equality? Gender equality for health means that women and men both have equal opportunity for realizing their full rights and potential to be healthy. But you all know the story is quite different. In India, poor and rural women, they don't have even access to basic health services. So let's all join hands together today for the woman and by the woman. And we can do much more in the field of cancer cervix. So I think we should dedicate this whole year for elimination of cancer cervix. Globally, there are almost 6 lakh cases, new cases annually of cancer cervix, and 3.5 lakh women die out of it. In India,
there are 1.35 new cases annually and almost 45 to 50,000 women die every year. We have an incidence of almost 18%. And as per WHO, we will say elimination of cancer cervix when the incidence is 4%. So let's screen every woman we come in contact. May she be our patient, our friend, our family member, our household worker, or anybody. If we all join as women for women, I think we will be able to achieve the target of 90, 70, 90. That is 90% vaccination of women, of girls under 15 years of age, 70% screening of the women at least twice in their lifetime, and 90% treatment of women who have been diagnosed for cancer. So I think we all should stand together for women. That's my motto of celebrating. Thank you. थैंक यू डॉक्टर संगीता फॉर काइंड वर्ड्स. और मैं लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि अपनी बेटी को दहेज में साड़ी मत दो, 3 कैंसर के शॉट्स लगवा दो. दैट इज माय वे ऑफ सेइंग. अब नाउ आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर उमा राय मैम. शी हैज वर्कड इन BHU, AIIMS and Lady Harding to kindly enlighten us with few words of wisdom. Dr. Uma ma'am. I think it's really Sangeeta spoke very well that we should all on the Women's Day, and especially with the 2022 motto that we should be unbiased and the women should be really made in all the fields, equality. And we know there are so many women who are really doing so much such better things. And as being a doctor, I think we are supposed to remember we look after the family, we look after the kids, and of course our own profession. And as being a professional, you do, as Sangeeta said, the cancer prevention, so many things. I mean, women's health, we look after. It's really a great boon, and we should all, and especially the underprivileged women, we need to be more educated. They know they have help. There are volunteers who can really, especially during antenatal period and during intranatal period. And I think we need to have government organization hospitals much better than they do. And they are really doing. When I was in the medical colleges, and I know how much we used to do for them. And like in Lady Harding, I remember 150 women in the antenatal thing, doing their antenatal care without any. I think it's a very important thing, and we should keep the motto that the women unbiased, and they should be really made equal, and not only equal, maybe better than men. Thank you so much, Dr. Uma. Thank you so much. So may I request Dr. Jyoti Bhaskar to recite a beautiful poem for us. Dr. Jyoti. Thank you so much. First of all, a very happy Women's Day to all, and to have my mentors speak, inspire us. So the poem that I'm going to be speaking, reciting today, I wrote it while sitting under a tree on a winter morning, trying to search or trying to bring about my quest for happiness. And that is what all of us women are looking for happiness in our lives. So just reading this poem out, musings under the tree on a winter morning. I sat under the tree, cold wind touching my cheeks, bright sun warming my soul, birds chirping above me, all inciting me to think, and rethink. Yes, I'm still young. Yes, I'm just on the other side of 50. Yes, I have another inning yet to play. Yes, I need to listen to my heart. And yes, I need to think, and rethink. Do I need to shout from the summit of the mountain to say, I'm still here? Do I need to dive into the ocean to find pearls to still prove my worth? What are my aspirations for the rest of my life? How do I wish to live the next phase of my life? When and where? And will I ever stop to rest? Have I ever given it a thought? Have I ever spent time with myself?
Have I ever felt it so important? I looked up into the deep blue skies above, clear as a mirror, and it showed me who I am. I took a deep breath. The freshness of air filled me with hope and new thought. I need no appreciation. I need no position. I need no visibility. I need not to prove who I am. This life is mine. Its joys and sufferings are mine. The victories and failures are mine. The devil and Buddha too are mine. All I need to do is build a palace of happiness within. Search not outside, but within. Appreciate my life. Applaud my courage. Enhance my wisdom. Exude and share my compassion. This is what I learned when I sat under the tree. Flowers dancing in the wind. Birds flying in the sky. All playing a symphony of joy. Thank you. Wonderful. Great poem. Thank you. Sujata, unmute yourself, please. Okay. Now I want to invite Dr. Anita Rajoria, ma'am. She's going to present a poem. Thank you, Dr. Sujata. Thank you, my DGF family. Of course, cut the chain, break the bias, move up the ladder to reach top of the dais. That is the theme of this year on Women's Day. So I have been given responsibility. मातृभाषा में एक कविता पाठ करने को कहा गया है. मेरी कविता का शीर्षक है सबल, सशक्त, समर्थ. हर घर आंगन की बिटिया बहू प्यारी हूँ. जीवन के झंझावाती तूफानों पर भारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. अंधेरे मिटाती दीपक की सहज लौ. मैं तमहारी हूँ. मैं रश्मि उदीप्त, उज्ज्वला, प्रकाशकारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. आशा एवं विश्वास भरी पुष्पों की क्यारी हूँ. विषमता और राह अवरोधकों से कभी न हारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. भुला न सके इतिहास जिसे, भुला न सके इतिहास जिसे, वह कर्मकारी हूँ. नव राष्ट्र, नव समाज, नव चेतना की रचनहारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. लक्ष्मी बाई सी वीरांगना, सरोजिनी सी मृदभाषिणी कोकिला और इंदिरा सी राष्ट्र हितकारी हूँ. अटल अदम्य धैर्य धारिणी, साहसी सहचारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. कोमलांगी गृहस्था, वात्सल्यमयी माता, आचरण से तो परिवारी हूँ. निज कार्य क्षेत्र में निपुण, सफल चिकित्सक व अधिकारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. त्याग समर्पण की प्रतिमा, अथाह प्रेम का स्रोत और शुभ संस्कारी हूँ. अनुभवी नारित्व की, नटखट बालपन की किलकारी हूँ. मैं सबल, सशक्त, समर्थ नारी हूँ. जय हिंद. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद. वेरी गुड. थैंक यू. अब इस सुंदर कविता के बाद हम लोग एक और कविता सुनने जा रहे हैं by डॉक्टर दीप्ति शर्मा. डॉक्टर दीप्ति शर्मा. नमस्कार मैम, आप सब लोगों को नमस्कार. मेरा मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा शिवम हॉस्पिटल नरोरा जिला बुलंदशहर से हूँ. इस विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों में पिरोकर एक कविता के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ. उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी. मेरी कविता का शीर्षक है नारी तू महान है. नारी तू महान है, शक्ति का तू रूप है, तेरे अनेक स्वरूप है. नारी तू महान है, करुणा में प्रेम की मूरत है, लक्ष्मी का तू रूप है. नारी तू महान है, माता पिता का अभिमान है, पति का तू स्वाभिमान है. नारी तू महान है,
बच्चों के लिए वरदान है, तुझमें भी भगवान है, नारी तू महान है। विद्योत्मा से विद्वान है, रानी लक्ष्मीबाई सी बलवान है, नारी तू महान है। तू सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तू सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मानव जाति की सृजना है, नारी तू महान है, नारी तू महान है। नारी तू एक पूरा जहान है, संवेदना की संतान है, तेरे मूल में ये हिंदुस्तान है, नारी तू महान है, नारी तू महान है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आप लोग के सामने प्रस्तुत है डॉक्टर शैली सिंह की एक कविता। आई थिंक उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो मालती आप प्लीज उसको। It's a song she has sung to pep up the mood for everyone. My DGF family, a very, very happy Women's Day. सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये जो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़े हैं हम सफर, अजनबी तो है डगर, लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम मगर। हाँ में जो लिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। रिप 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 बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो वही चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। A very happy Women's Day to everyone. बादलों पे पैर रखे चलो आसमान को छू ले। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवियत प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवियत प्यारी। बंसी बजैया रास बजैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंदन गोविंद सखी सखी सुंदर
ज्योति बाली को इनवाइट करूंगी कि आगे की प्रोसीडिंग्स को देखें. वेलकम डॉक्टर ज्योति. Thank you, Sujata. Let me thank our mentor and DGF Supremo, Dr. Professor Sharda Jain ma'am, to have given me this opportunity, and kind of Dr. Meenakshi Ahuja to have taken me under her wings. Thank you, ma'am, so much. Before I wish everybody a happy International Women's Day, I have just few lines to read out for everybody. I may have missed few names, so forgive me for that, but I wish each of you, but there are few names I have mentioned here. मासूमियत हूँ मैं, बेटी हूँ, केयर करती हूँ, बहन हूँ, अंडरस्टैंडिंग है मेरे में, दोस्त हूँ, डेडिकेशन है, पत्नी हूँ, दिव्य हूँ, माँ हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, नानी या दादी भी हूँ, सबको साथ रखा है मैंने, वो मैडम उर्मिल शर्मा है डीजीएफ में, सबकी जिम्मेदारी ले ली मैंने, प्रोफेसर डॉक्टर शारदा जैन मैडम, सबको हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ मैं, डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा, जब आप उदास हो जाएं तो मैं नाच गाना भी दिखा देती हूँ, दोस्त हूँ आफ्टर ऑल, सुजाता, डॉक्टर मंजू बारे, एबीसी टीम ऑफ ईस्ट दिल्ली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एंटरटेन्ड अस ऑल दीज इयर्स. जब बुलाओ चली आती हूँ, डॉक्टर संगीता मैम फ्रॉम ईएसआई हॉस्पिटल. That is what is the power of DGF, and nothing more to wish each one of you here a happy International Women's Day. With this, I will be now inviting our invitees for this program today. The first guest on the list is Teacher of Teachers, Professor Dr. Sanjeevani Khanna ma'am. She will be reciting a poem and an address from her. Poem, I think ma'am will be reciting on her behalf if she's not here. Over to you, Dr. Meenakshi ma'am. Dr. Sanjeevani has sent her good wishes to the whole DGF team. She is currently in the UK and so could not join it. And she has asked me and requested me to recite a poem she has written herself. She said that that is dedicated to all women because it is dedicated to her mother. And the name of the poem is The Love You Gave Me, Ma. Pure and overflowing, pristine and never ending, incomparable with everything, soulful and harmonizing. Life was a symphony of soothing words, yet disciplines many. Children's books and a bunny, a dog and a cat funny, drenched with kindness plenty, were my possessions tiny. And how that time, without agony, flowed past, like a river in a hurry. O river, you could have slowed, till my heart's content showed. Maybe that is destiny. But how can a river not do its job of flowing? That it's meant to be for centuries many. That would spoil its profiling. Ma, your love keeps ringing in my heart, soul and being. You were my guru respected. Never let me feel rejected. Neither incompetent nor tardy. You knew all shades of mine. You were happy I'd become a doctor who'd treat with medicine and surgery, but most of all with empathy. You noted that. You knew it was your love which helped me play my part. Yes, it was and it is your love. Couldn't you have stayed forever to guide me more and more on our planet Earth? My life would have been soaked in merriment, laughter, and mirth.
Love you, Ma. Always, Sanjeevani. Thank you so much, Such a beautiful poem. Such a beautiful poem. Very emotional. Yes. माँ तो हमेशा रहनी चाहिए. बहुत सुंदर, बहुत. I now invite Professor Dr. Raj Bokaria, ma'am, if she's here, or I think she's stuck with some emergency there. She was to give us. She's in an emergency, yeah. Okay. Then I now next invite Dr. Jyoti Agarwal to say a few words of wisdom to the DGF family. First of all, my heartiest congratulations to each and everyone on this International Women's Day, respected seniors and my dear friends. And आज मेरा दिल बहुत खुश है. मैंने बहुत टाइम बाद आज डॉक्टर उर्मिल शर्मा मैम को और डॉक्टर उमा राय मैम को देखा है. Really, man. आपने दिख रहे डॉक्टर ज्योति हमें. आपने दिख रहे. I don't know, this video somehow is not working. That's okay then. Actually, I hope it's not a error. No, I'm clicking it और मेरा बार-बार off हो जा रहा है. Somebody is switching it off. I don't know why. It was working earlier, but now it has suddenly disappeared. Let me try once more. Sorry, Meenakshi, it's somehow not working. So, आज डॉक्टर उर्मिल शर्मा मैम को, डॉक्टर उमा राय मैम को देखकर आज बहुत अच्छा लगा. बाकी सबको भी देखकर बहुत अच्छा लगा. उन सबसे तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मिलना होता है. बट डॉक्टर उर्मिल शर्मा मैम और डॉक्टर उमा राय मैम से आज मैं 2 साल बाद मिली हूँ. सो इस शक्ति पर्व पे मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. और मैं आज ये कहना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर इन फ्यू वर्ड्स माई जर्नी. मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब लेडी डॉक्टर्स एक प्रिविलेज लॉट है. अगर मैं अपनी जर्नी को पीछे देखूं तो मेरा मन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है, क्योंकि मैंने हर फील्ड में जरूरत से ज्यादा पाया है. और आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये उम्मीद जरूर है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और हमारे हित में होगा. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे ऊपर, हमने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, सरकार ने जो भी हमारे ऊपर खर्च किया उसको मैं इंटरेस्ट के साथ जरूर अदा करना चाहूंगी. DGF कोर्स में एक अच्छा टीचर बनके, प्लस अपना विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एज अ डॉक्टर के रूप में काम करके. अब मेरा ये वीडियो काम नहीं कर रहा है. आई हैड गॉट सम चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स फॉर यू. I will just try the video again, but here are some chocolates and flowers for you all. And these are the chocolates are from my granddaughter, and the flowers are from my side. Long live women, Dr. Power. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I don't know ये वीडियो को क्या हो गया, मेरे मैं भी देखती हूँ. I now invite Dr. Rupam, a senior consultant from earlier Max, and now she's joined Cloud9 Hospital, a well-known gynecologist from East Delhi, to say a few words to us. Is Dr. Rupam here? Yeah, she would be. She said so. I think if Dr. Rupam? then I can, Dr. Rupam is here. I can see her on the screen. then Dr. Rupam, could you please unmute yourself so that we could hear you out? Or then can I Unmute yourself, Dr. Rupam. Unmute. Ravindra Arora के नाम से she is there. Unmute yourself. See, she is joined from SIRS. मैम, आज मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ. और आज का दिन मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. आज मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जो कि मेरी माँ ने लिखी हुई है. अरे वाह. और इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. मेरी माँ मेरे लिए रोल मॉडल रही हैं और हम 4 बच्चों के साथ उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन करी है. और शी इज कवित्री, पोएट है आल्सो. इस कविता का शीर्षक है नारी. नारी तुम अबला नहीं आज, अब तो ये बात पुरानी है. सबलाबन तुमने दिखलाया, अब तो यही नई कहानी है. तुम शक्ति स्वरूपा देवी हो, अपनी शक्ति को पहचानो. माँ, पत्नी, बहन, सुता बनकर अपने को छोटा मत मानो. तुम जननी हो, तुम पूज्या हो, तुम ममता हो और सदा जगत कल्याणी हो. वो नर का आधा भाग तुम ही दुर्गा, रंचंडी और भवानी. जब जब शत्रु ने व्यूह रचा, तुमने है उसका नाश किया. बल बुद्धि शौर्य में कमी नहीं, इतिहास सदा से साक्षी है. नर और नारी का यह विवाद बिल्कुल ही बेमानी है. नारी बिन पुरुष अधूरा है, नर बिन नारी भी आधी है. जेंडर बायस है ना.
दोनों के मधुर मिलन से ही यह जीवन स्वर्ग बन जाता है। नर और नारी का युग युग से प्यार भरा यह नाता है। तुमने ऐसे सपूत जन्मे जिनसे बलशाली देश बना। आंचल का अमृत पीकर ही यह पुरुष सदा बलवान बना। पृथ्वी जैसी हो सहनशील और तेरा सिंधु सा विशाल। तेरी महिमा के आगे छोटे हैं हीरे पन्ने माणिक और लाल। जब तुम हो हर तरह समर्थ, फिर क्यों संरक्षण मांग रही। अधिकार सदा छीनने जाते तुम क्यों करुणा से मांग रही। अपनी संरक्षिका बनो स्वयं, नरकश रास्तों के बंधन छोड़ो। तुम स्वयं उठो, यह देश उठे, नव युग से नव नाता जोड़ो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you so much, ma'am. Malti, could we now have the poem played by Dr. Geetu Gaba? Thank you, Dr. Rupam. It was really nice. So I'm very happy that DGF has called me and given me this opportunity to recite a poem. मैं थोड़ी कभी छोटी पोएम लिखती हूँ। एंड रिगार्ड्स टू डॉक्टर जैन, ऐसे उन्होंने बोला कि पहले गुरुकुल थे बहुत सारे और नारी कभी अबला नहीं थी। ये तो 500 years ago जब मुगल्स आए, लोधी आए, में कुछ करने की आग है मुझ में। जीवन है एक सुंदर सपना और उस सपने की शुरुआत हूं मैं। वी आर द गिविंग द बर्थ इन इट। एक आदत जो दूसरों को सम्मान देने की, अपने से आगे बढ़ाने की। समाज ने कर दिया परिवर्तन मेरे वजूद का, मेरी आत्मा का, और कुचल कर रख दिया मेरी अस्मिता को। ये इंतहा थी, बस अब और नहीं। मैं ना अब सीता बनूंगी, ना किसी राम के लिए अब दुख सहूंगी। मैं दुर्गा थी और हमेशा रहूंगी। मैं ही कुष्मांडा हूँ, मैं ही अष्टभुजाधारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हर काम करने को तैयार हूँ। हवा की एक बयार हूँ, बच्चों का प्यार हूँ, माँ का दुलार हूँ। Malti, are we ready with Dr. Geetu's poem? Very nice, Ruchi. Thank you, ma'am. को डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि ये मुझे अभी मिली है। एक मिनट बस। Dr. Meena Harsinghani song also. Next one is song by Dr. Meena Harsinghani ma'am. Could we listen to the song then? Dr. Meena, you were online. Happy International Women's Day to all my seniors and friends. The song is ये है रेशमी जुल्फों का डेरा न घबराई, जहाँ तक महक है मेरी गीतों की चली आई। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरी गीतों चली आई। सुनिए तो जरा जो हकीकत है कहते हैं हम, इनती खुलते इन रंगी हंसों लबों की कसम है नजर, ये भी कहने की है बात क्या। तुम मेहमान तो न ठहरेगी ये रात क्या। रात जाए रहे आप दिल में रहे, रात जाए रहे आप जाइए। ये है रेशमी जुल्फों का महक है मेरे गीतों की चली आई। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति की नाइट मैरिजेस शुरू की। अदरवाइज हमेशा गुरुकुल में नारी को ससैन्य शिक्षा भी दी जाती थी और सब कुछ पढ़ाया जाता था।
सो मेरी कविता का शीर्षक है नारी नहीं है अबला। मैं एक नारी हूँ, ना कभी थी और ना अब बेचारी हूँ। मैं बेचारी नहीं, मैं एक नारी हूँ, फूल से सुंदर, चंद्रमा से शीतल। So if Dr. Geetu is online, we'll request her to recite her poem live. Dr. Jyoti, unmute yourself. Dr. Geetu, over to you. Is she online? Dr. Geetu Gaba from Dwarka. Yeah, just give me a minute, please. Yeah, sure. Or should we take one dance sequence before that till you get ready? Please. Yeah, please do that. So one dance. Yeah. In the dance sequence by Dr. Monica Kansal. Yeah. Malti, you share that. बहुत सुंदर. Yeah, Dr. Geetu is there. I can see her on the screen. Ma'am, over to you for your poem. Waiting to listen. Good evening. Thank you for including me in this program. I'm really motivated by the words of my seniors. And if I can add just one thing, that I feel women empowerment should be that we should strive for the financial independence of each and every female. Once she is financially independent, she can make all healthcare decisions for herself, and she's not dependent on anyone to tell her what she needs and what she doesn't. थोड़ी क्रांतिकारी हूँ मैं, so इसलिए क्रांतिकारी type poem सुनाऊंगी. It's very dear to my heart by this very nice author, Pushpamitra Upadhyay ji, and I'm sure most of you have already read this poem somewhere. And the शीर्षक इस poem का है सुनो द्रौपदी अस्त उठा लो. छोड़ो मेहंदी घरक संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. दूध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है. होठ सीलिए जनता के, कानों पर पहरा भी है. तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे
किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी अष्ट उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे. Thank you. Now we have the last dance performance in my list here. Jyoti, this is Dr. Khimani. Hi ma'am, welcome. Yeah. I've already requested Jyoti that we can have your talk first. I've Yes. just put on the group anyway that ma'am is here. Please, let's have her talk before we have the dance. Because I'm Yes. sure it's time for your OPD, ma'am. I've Yes, just put that request there in the group anyway. It's not talk, but I thought it was Over very... to you, Dr. Manjumani ma'am. Yeah, I thought it's very appropriate, when Geetu said that I'm Krantikari. So I had also gone in a very different tangent, I didn't think of all these dance and songs. So I was just thinking, why do we need women empowerment? So I was reading, and even in Western world, there have been 3 waves of women empowerment. So even the condition of women in that kind of scenario was also same so many years back. And I was for our history. So in Vedic world, that was the only time when women was equal to men. Then it kept on deteriorating in Buddhism, Jainism, and then these Mughals invaded. And now we have come to this state that stage where we are thinking how to do the woman empowerment, right? So just going through that is. So women in India represent the 29% of labor force. In villages, in agricultural land, 40% of work is done by women, but they own only 9% of land because land is never given to women. In all over the world, 37% of GDP is created by women, but in India it is only 17%. And the rate of crime in India is as 50%. What is this? I think the change cannot be overnight, but change will be only by education and changing our culture. So let's all, pledge that at least I'll teach one woman, underprivileged, so that if she's educated, the whole family will be educated, and maybe we won't need these kind of woman empowerment things in later on in life. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. All of us think that women rights were very good in the West, and like ma'am said just now, Dr. Kimani, did you know that in Switzerland, women got the right to vote only in 1971? But we've been voting from 1947 in India. We've, ever since we gained independence, women were treated equal. But in a country like Switzerland, which we think is the epitome of everything, women got the right to vote only in 1971. Just sharing. Moving forward, I request Malti to play the last dance sequence item for my program, that is Dr. Shalini Agarwal's. Malti, over to you. From DGF आज नारी के सर्वोत्तम रूप जो कि माँ का है, उसको अपना ये डांस समर्पित करती हूँ। यह गाना उन सभी माँओं के लिए और मेरी स्वयं की अपनी माँ के लिए जिन्हें मैंने पोषित लव यू माँ।
Thank you. Thank you, Manu, for doing this for us. And wonderful, Dr. Shalini. It's the audio visual which is a problem sometimes. We would wait to see again these programs once we go like physical meetings. May I say something, please? Yes, ma'am. Yeah, Please, yeah. Dr. Shalini Agarwal is from my forum, and she's she danced to this number, you know, and that was a couple of months back when she had actually lost her mother. And I remember she danced this number and she brought us all to tears, making us realize that whatever we are today, wherever we are, in whichever post where we are occupying, our mothers have had a very huge role. So we shouldn't forget them. So I really loved this, and I told her, you danced to this song again, and I'm thankful that she did it. Although I agree that the visual wasn't so good. Sometimes we have it when we have physical meetings, ma'am. Yes, yes. Thank you so much, ma'am. I now hand over the program to our senior Dr. Vandana Gupta, ma'am, to take over from here for the last bit of it. Thank you, Dr. Jyoti. And I really thank everybody and Dr. Shada Jain, ma'am, Dr. Urmil Sharma for celebrating womanhood. See, there was a saying that I have been lucky to be born as a woman because I must have done something great in a previous life. Where there is a woman, there is a magic. All the women are very, very strong. Feminism is about changing the way the world perceives the woman's strength, not the woman asking for feminism. So there is no limit to what we can achieve as a woman and accomplish. This is a saying from Mrs. Michelle Obama. With this, I will invite our next speaker, Dr. Nalini Mani, ma'am. Thank you very much. I'm really blessed to be sharing my thoughts today with my seniors and friends. A lot has been said about empowering, and I had to last minute change what I was to speak actually. Wonderful wife, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister, nurturing mother, and a professional. Yes, we are that women. Life is an incline, it either goes up and down, and hundreds of things happen with us, good or bad things, but we must learn from each one of these experiences. Normally we say empowered woman is the one who's educated, but as my previous speakers had also said, Dr. Manju pointed out, in our rural areas and semi-urban areas, women are contributing immensely. And we have to break this bias and empower everyone, each one of us. And it's not about conquering the world. We are not to conquer the world. Actually, empowerment doesn't mean that. We must realize our strengths and respect all women, not because of their gender, but because of their identity. And we have the power to create, power to prevent, and power to empower ourselves. No one will tell us about an opportunity or give us. It's for us to take and grab it. As Mrs. Gandhi famously said, and I quote her, you can't shake hands with clenched fist. We have to open up and empower everyone. It's a great responsibility. Success of one woman should be celebrated, and we should be strong, courageous, and at the same time humble and kind. And we need to help each other. Last one, I कहना चाहूंगी, we need to empower our sons and tell them to respect women. It starts from home. Only then we will not have these empowerment days actually. और मैं एक छोटी सी पंक्तियां कह रही हूँ मिस निधि नेरवाल की, जो एक अपकमिंग बडिंग पोएटस हैं। सागर के तट की रेत हूँ मैं, पहले सूरज की लाली हूँ मैं, कमजोर नहीं नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं एक एक पे भारी हूँ मैं नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं. Thank you very much. And happy Thank you, Dr. Mani. Day to everyone. Dr. Vandana, Dr. Chitra Agrawal also wants to sing. Okay, ma'am, I'll accommodate her. So the woman should feel herself, as Dr. Mani said. Now I invite to Dr. Seema Sehgal to give her address on this Women's Day. Dr. Seema Sehgal. All of us, because this is for tomorrow's post. This is the post that they've asked us to click. Yes, break the bias. Could you please click a picture of all of us? Yeah. Okay. डॉक्टर वंदना, मैं आप 5 मिनट्स के बाद बोल लूं, क्योंकि मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ. आई मीन ओके कार ओनली.
Okay. Fine. So we can have a song by Dr. Chitra Agarwal in the meantime, if she's there. Dr. Chitra? Yes, I am there. Yeah. I want to sing that old song which I... So shall I start? फूलों के रंग से दिल की कलम से मैंने लिखी एक पाती सोचा था एक दिन सबको सुनाऊं नारी दिवस पर सुनाती नन्ही सी बेटी जीवन में आई भाई ने राखी बंधाई पत्नी बनी वो माता बनी वो खुशियों की बहार लाई हाँ बेटी बहना माता पत्नी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार हाँ इतना मधुर ते ये मेरा अवतार लेना होगा जन्म हमें कई बार शारदा भी मैं ही लक्ष्मी भी मैं ही दुर्गा मैं ही काली विद्या की देवी पैसे की देवी और मैं ही हूँ शक्तिशाली सीता बनी मैं राधा बनी मैं ही थी झांसी की रानी सृष्टि की जननी ममता की देवी त्याग ही मेरी कहानी हाँ बेटी बहना माता पत्नी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार हाँ इतना मधुर ये मेरा अवतार लेना होगा जन्म हमें कई बार Thank you, Dr. Chitra, for a beautiful parody and lovely, very nice. Now I invite Dr. Kritika Rehani from Central DGF, if she's online for a poem. Dr. Seema is also ready, I think. No, I'm just okay. Okay, then, ma'am, Dr. Seema, you proceed. Sorry for the inconvenience because my baby cards. No, not at all. Not at all. And thank you very much for inviting me and happy International Women's Day. I start with a quote by J.K. Rowling. And we all know that she wrote many novel series of Harry Potter. And what she says, we do not need magic to transform our world. We carry all the powers inside ourselves already. And this is what I believe. As a woman, that being a woman is a complete itself. You don't need anything outside because we have everything inside as well as outside. That woman is like a seed, and the seed which can be grown anywhere, in any circumstances. Any type of food can be given, and it depends what fruit it gives, depend on how you nurture it. And here we all are. We are the blessed fruits because we have been blooming with success. And it is because we've been taken care by our parents, our society, our friends, our colleagues, and no doubt our patients also. So every woman bears the fruit, and that fruit depends on how you nurture it. So it is a request that every seed, every woman should be nurtured in a proper way so that the fruit is wonderful. And two more things I want to say on this day, that the message is that woman should be symbolized to a love. Whenever you think about a woman, it should be a love only, which we can think of.
because you should be filled with love so that you can give love to everybody and can change the society. Secondly, we have to take the responsibility to change this world, and responsibility that we can do everything ourselves, and we have to just realize the thing, accept the thing, and condemn the society. And we should stand against the male-dominated society and should take the responsibility to do our part and do the bit which we can do to change the world. So this is two things which I wanted to say. And because कहा जाता है कि मैं ऊर्जा हूँ, मैं ऊष्मा हूँ, मैं प्रकृति भी हूँ, मैं पृथ्वी भी हूँ, मैं आधी दुनिया हूँ, पर मैं पूरी स्त्री हूँ, क्योंकि मैं शक्ति भी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ और मैं सरस्वती भी हूँ. धन्यवाद. Thanks, Dr. Seema. Very nicely said. If Dr. Kritika is ready with a song, with a poem, sorry. Dr. Kritika, I can see you. Yeah. Yes, ma'am. Good evening. Yeah, thanks for the opportunity. I joined a little late, so I'm not sure whether the poem I'm going to recite is a popular poem from the movie Pink. I wonder if somebody else knows. Yeah. Doesn't matter. Go ahead. Welcome. Okay. This is Nari Shakti from the film Pink. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है. जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है. तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. चुनर उड़ा के ध्वज बढ़ा, गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बढ़ा, गगन भी कब कपाएगा. अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. Thank you. Thank you, Dr. Kritika. It has been really well said that a woman should feel her self-worth and achieve her goals as per her potential. They contribute tremendously in all spheres of life, and woman is the best creation of God, and all, good or bad, every human being comes through a womb of a woman. So she should feel very proud that all the great personalities have been born through her. So next I invite a poem from Dr. Mani. It's a hilarious take. Thank you so much. Give us an opportunity. Kirtika is a star. Yeah, good. I know, Dr. Malvika. Dr. Shivani gave me the name. Yeah, she. So much. So, Dr. Mani Kapoor, are you ready? You can call Shobha, Doctor. I call Dr. Shobha Chadha. Are you ready? Okay, ma'am. Thanks for giving me opportunity. About 2 lines about women empowerment. Here, I want to say we keep talking all the time about justice, self-respect, harassment, and other things. But one point I want to highlight here, which one more doctor said prior to me, that we have to educate our sons, and we the mothers at root level can do this the best, to respect women, to begin with the mother, the sister, the colleagues, the students, and also at workplace. I mean, this is one thing which I wanted to say.
This is an additional point which is not much emphasized. And then एक गाना, a woman, destitute woman, maybe a divorced, a lonely girl looking for solace, a very sweet song. इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। बेरंग सी है पड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते कुछ रंग तो भरूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर लूं मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा। Thank you, thank you. Thank you, Dr. Shobha. So next we have a video of Dr. Mani Kapoor reciting a very humorous and hilarious take on modern woman. So Bharti, we will run videos back to back. One is a dance by Dr. Neeru Kiran, member Dwarika, and one is this hilarious poem by Dr. Mani Kapoor. Hello, my dear friends. A happy Women's Day to all of you. आज सुबह पति देव से बात हुई and he said कि what is there in Women's Day? What is so special? Why should you celebrate? So I thought I should pen down my feelings for you as well as for him to let him know why this day is important for us. It's a very light poem. Take it in a lighter note. इसका शीर्षक है मॉडर्न नारी हूँ और सब पे भारी हूँ। हॉस्पिटल भी संभालती हूँ और घर भी टिच रहता है, अपना परफॉर्मेंस यारा ड्यूअल फिल्म माफिक चलता है। लाइफ मेरी बिजी है पर कभी न करती शो लाचारी हूँ, मॉडर्न नारी हूँ और सब पे भारी हूँ। बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो या करनी हो कोई टास्क, शर्त लगा लो डार्लिंग, मैं हूँ तुमसे ज्यादा फास्ट। खट्टी मीठी तीखी तेज और कभी लगती करारी हूँ, मॉडर्न नारी हूँ पर सब पे भारी हूँ। घर तेरे में आई रानी बनकर, अब हूँ लक्ष्मी बाई। वर्किंग लेडी हूं तो क्या हुआ, तुम हो मेरी असली कमाई। और मायके वालों को तो भूल के भी कुछ न कहना, कोरोना से भी बड़ी महामारी हूँ, मॉडर्न नारी हूँ और सब पे भारी हूँ। डॉक्टर हूं तो क्या हुआ, शौक सारे भाते हैं। लेटेस्ट आईफोन हो या कोई भी मेकअप का सामान, ये सब हमारे लिए ही तो मार्केट में आते हैं। कपल फोटो कभी देखी है, तुमसे ज्यादा लगती प्यारी हूँ, मॉडर्न नारी हूँ और सब पे भारी हूँ। मल्टीटास्किंग दुर्गा माँ जैसे 9 रूप है मेरे, अरे तुमने तो देखे हैं सारे जब लिए थे मुझसंग फेरे। हर रूप हर गुण में पूरी करती अपनी जिम्मेदारी हूँ, मॉडर्न नारी हूँ और सब पे भारी हूँ। मैं त्याग की मूर्ति नहीं, अपना हक जानती हूँ। श्रीवल्ली से कम नहीं मगर पुष्पा तुम्हें मानती हूँ। मुझे मुझसे अवगत कराने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी हूँ, मॉडर्न नारी हूँ
मगर सब पे भारी हूँ. Thank you. Thank you, Mani. Now, Malti, requested by Dr. Neeru Kiran Eka Chalori. She is a member of DGF. Thank you, Dr. Neelu, for the nice dance presentation. So now, next we go to a song, live song by Dr. Jharna Bipura. Dr. Jharna, she's been waiting for a long time. You're welcome, ma'am. Okay, good evening, my seniors, my juniors, my colleagues, and a very happy International Women's Day to all. So this song actually I chose because I want to say that women are very beautiful. Just as the nature is beautiful, women are also equally beautiful. So it's a very old song, so I'll just start singing that. बड़े अच्छे लगते हैं बट क्या ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद पहुंचाओगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं
Thank you for a very melodious song. Thank you, thank you. Now invite Dr. Akansha Kumar, daughter of Dr. Shakuntala Kumar, Thank for you so her much. song. Very nice song, yeah. Thank you, ma'am, for the opportunity. So I'll start. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ मैं एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। अगर तुम कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां हो, या मैं करूं तुमसे बयां कि राजा से रानी मिली थी कहाँ, कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, हाँ अगर तुम कहो। हम कह रहे हैं तुम गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। बहुत बढ़िया। Very nice. Very nice. आपसे Vandana, you have saved the best for the last, huh? No, It is a great बच्चों के मतलब बच्चे जब हमारे गाते हैं बहुत सुंदर, बहुत Thank you so much. Lovely, lovely, Akansha. Very good. You made our day. Thank you so much. Can we accommodate one from Dr. Manju Parikh? Before that, I would like to just make an announcement. I've still not even shared with Dr. Sharda Jain, but I will be discussing with her. Considering that this amount of talent that we have, and we've had DGF ki 2 walkathons earlier, one for Women's Day we had and one for the PCOS. So I'm trying to organize, and that's why I've not talked to Madam as yet. So it's a surprise for everyone who's logged in as yet. We are trying to organize a musical evening around the 27th, which is a Sunday in the evening. Now the hospital will be organizing it, and they know that whatever they do, we have to, DGF has to be a this thing, because we are a non-profit organization. Our participation is there as our involvement. And it is going to be in, again, that amphitheater in that open air auditorium in Connaught Place in the center. In the evening, we are planning to have. So I've been trying to motivate them for the Women's Day function. And so obviously everyone, all our singers have to start clearing their throats to sing on that day. So I hope that it comes out, and I will be discussing with ma'am. So we are hoping that we can bring that for Delhi Gynae Forum. You were Foxy dates at that time. Here I just Yuva Foxy is 25th and 26th. So this is 27th evening, which is a Sunday evening. Can I take one more announcement? Ji ma'am. TV9 had approached me that, they are ready to do multiple TV programs for the women issues which we are taking, cancer cervix and other things. So one day we want to have a little brainstorming session, 50 of us can join. What all can we do there? Because, to go live on the TV is very different than, talking here.
So I think, keep your mind open, and then we will definitely have a discussion on that. Okay, ma'am. Okay, thumbs up. So we give an opportunity to Dr. Manju to share her talent. We know she's very talented. Thank you. Thank you, Dr. Vandana, for the given opportunity. Actually, this is a very beautiful poem which is written by my friend, Dr. Ritu Verma. It is just for the gynecologists. So I wanted, see, all gynecologists should hear this. The poem का शीर्षक है जगत जननी। कितनी अलहदा होती हैं ये प्रसूति विशेषज्ञा, अपनी ही धुन में गांभीर्य की चादर ओढ़े हुए ना सही से सो पाती हैं, ना सही से रो पाती हैं। जीवन बचाते बचाते जाने कब पत्थर की मूर्ति सी बन जाती हैं। बस एक ही ध्येय है, जीवन की रक्षा और प्रसूति का बचाव। नव किस्ले की सुरक्षा, रुकती भागती वक्त बेवक्त रक्त का इंतजाम करती, सदा चौकन्नी जीवन के जन्म में ईश्वर का हाथ बटाती है। कर्मठ वीरांगनी जाने कब स्वयं मां बन जाती है, कि तू कहाँ पूर्ण रूप से अपने बच्चों की मां बन पाती है, क्योंकि इस जगत जननी को उन अजन्मे गर्भस्थ शिशु की फिक्र है जिन्हें सुरक्षित इस दुनिया में लाना है। कितनी अजीब होती हैं ये स्त्री विशेषज्ञा, किंतु होती तो स्त्री ही हैं। अवसर पाते ही जब भी एकत्रित होती हैं, तितलियां बन जाती हैं। अपने ही परों की फड़फड़ाहट सुनने लगती हैं, नदी बन जाती हैं, कल कल बहने लगती हैं। एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें कहने लगती हैं। होती तो ये स्त्रियां ही हैं, पैरों में बिजलियां बांध के नाचने लगती हैं, जीवन के रहस्य वाचने लगती हैं। युवा रहना चाहती हैं ताउम्र, ताकि पूर्ण शक्ति से मानव सेवा में जुटी रहें, संसार में नव सूरज की तरह उगी रहें। किरण किरण बिखरती रहें, बिखर बिखर किरण होती रहें, बिखर बिखर किरण होती रहें। थैंक यू। मैम 2 लाइनें मैं बोल दूं, 2 लाइन्स बोल दो। जरूर जरूर 2 लाइनें। मैडम ये है कि मेल्स भगवान ने बनाए, आदमी भगवान ने बनाई औरत, पर उसने औरत के लिए बहुत सोचा, सोच समझ के बनाई। आदमी जो है इनको हमेशा औरत की जरूरत सुबह से शाम तक रहती है। अब जैसे अगर हमें सुबह से शाम जरूरत भी है, और हम लोगों को हर अपनी शुरुआत की, मेल्स को भी, हम तो चलो जो आएंगे उसमें वो हमारी जरूरत रहती है। जैसे सरस्वती विद्यादायिनी, यहाँ से हम शुरू होते हैं। फिर हमें पैसा कमाना है तो हम लक्ष्मी जी आ गई बीच में। उसमें अगर हमें आगे कुछ करना है तो हमें शक्ति चाहिए। हाँ, फ्रॉम डॉन टू डस्क हम लोगों को, जैसे मेल कहते हैं कि हम डॉन टू डस्क काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें सब, जैसे खाना बनाना, तो यानी कि उषा से संध्या, उषा से संध्या तक वो लोग अन्नपूर्णा को ढूंढते हैं। निशा के आने में हम अपनी निंदिया लेते हैं। तो हर तरफ से आती तो फीमेल ही है हमारे पास। अब रातों को सपना लेते हैं तो सपना भी हमारी एक फीमेल ही हो गई। अच्छा, अब हम अगर हम पढ़ने लगते हैं हिंदू, दिस थिंग, मंत्रास, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रा गायत्री मंत्र। फिर हमें पढ़ने को बोला जाता तो दैट इज ऑल्सो गीता। अब उसके बाद हमें कुछ भी करना है, चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं या हम गीता पढ़ रहे हैं, वी डू पूजा, वी डू आरती, उसमें भी हमें श्रद्धा चाहिए और प्रार्थना चाहिए। हाँ, अगर हम बहुत थके हैं, हारे हैं, हमें पीस चाहिए तो हमें शांति चाहिए। इसलिए अगर हम अकेले हैं मेल्स तो हमें स्नेहा और प्रेमा चाहिए। और अगर हम बैटलफील्ड में हैं मेल्स जैसे, तो उनको विक्ट्री यानी कि उनको जया चाहिए। तो हर कदम पे, हर जगह हमें फीमेल तो चाहिए। एंड व्हेन वी आर गेटिंग ओल्डर, देन व्हाट वी नीड, तब हमें चाहिए ममता,
करुणा, और अगर गुस्सा है तो क्षमा. So, females जो हैं, basically, you might have understood my bhavana also now. So basically, we, women are the main architects of this world. उनके बिना तो कहीं भी कोई गुजारा नहीं है. And women have shown also that as a daughter, daughter-in-law, mother-in-law, mother, sisters, and friend, they keep on, helping you all the time. And in, during these COVID times also, पुलिस वाली हों, डॉक्टर्स हों, इन एवरी सफाई कर्मचारी हों, हर तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया. So thank you very much for giving me time. बहुत सुंदर बोला आपने. Thanक यू. ये मेरे को कहीं से मिली थी तो मेरे को पेपर नहीं मिल रहा था कि कहाँ लिख दिया, तो मैं फिर ढूंढ गया. मैंने कहा मैडम से रिक्वेस्ट कर लूंगी. तो मैंने अभी मिल गया पेपर, सोचा बोली दूं. वाकई लगता है कि ये शाम का कभी अंत ना हो. सब लोग इतने रिलैक्स मूड में हैं और एक्चुअली एंजॉयिंग विमेन्स डे, सेलिब्रेटिंग इट, celebrating women, celebrating poetry, celebrating achievements, celebrating words. And I think everyone has had a lovely evening, but like everyone knows, the show must go on and women have to sambhalo the show. All of us have to go back to OPDs, have to go to looking after our children, our patients, our families, our kitchens, because women work 24/7. Our minds are working when we are resting. So there is no, we are actually Karam Yogis. And that is why I think this beautiful program envisioned by Dr. Sharda Jain ma'am has been such a relaxation for us. पहले भी उससे सब ओपीडी और काम कर रहे थे, अब वापस भी वहीं जाना है. मगर जिन लोगों ने वक्त निकाला, it is not only the participants, but everyone. I was seeing Dr. Shama was hooked on from the beginning to the end. Dr. Shashi Kabra was joining in even when she was driving. So I think that, you know, how much we look forward to being with each other, and we hope to have more celebrations in the future. Thank you to my anchors, the show stoppers, and everyone who has participated and everyone who has tuned in for the program. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Thank you. Happy Women's Day. Thank you, everyone. It and all your anchor person. I think thank you very much. Wonderful program. Thank you, everyone. A great show by you, Meenakshi. Okay? Yes. Great show. Thank you. Thank you. Good evening, ma'am. Thank you, Vandana. Bye, buddy. Bye. Namaskar. Dr. Jyoti Bali, Dr. Sujata, thank you very much. Thank you, ma'am. And thank you for all the participants, you know, who are made it a real great success. Very, very nice. Great. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Even the audience has been a big star today. Absolutely. Bye bye, everyone. It was a wonderful program. Nice. उन लोगों ने सारी